Hello, my name is Animesh Chaudhary and I'm academic head at the WallStreet School for accounting courses. I come across a lot of candidates who are interested in ACCA. But when I ask कि ACCA के बारे में बताओ, ACCA के करिकुलम के बारे में बताओ, उसके एग्जाम्स के बारे में बताओ, तो उन्हें कुछ खास आइडिया होता नहीं है. So in this video we will be discussing about the same. Let's begin. In ACCA in total we have 3 levels. To start with हमारे पास है नॉलेज लेवल जहां पर हमें मिलेंगे 3 सब्जेक्ट. इसे क्लियर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे टू आवर स्किल लेवल इन विच वी हैव 6 पेपर. When we clear even that, we will get to our final level which is called professional level in which we have 6 paper again. About skill level and professional level हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल हम फोकस करेंगे हमारे नॉलेज लेवल के ऊपर जहां पर हमारे पास है 3 सब्जेक्ट जिनके नाम है बिजनेस टेक्नोलॉजी विच इज बीटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीटी के बारे में. सो बीटी का जो सिलेबस एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट सेक्शन. सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. लेट्स टॉक अबाउट देम. In section A, we will discuss about business organization and its external environment. In section B, we will talk about organizational structure, culture, governance, and stability and sustainability. Then we have section C, in which we will discuss more on business functions, their regulations, and the technology that we use in that. Then we will be having section E, in which we will talk about the personal effectiveness and communication in the business. Then we will be having section D, in which we will be focusing more on leaderships and management. And then finally, we will be having section F, where we will talk about professional ethics. अब आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे सिलेबस एरिया में कुछ एरोज हमने मार्क किए हुए, विच इज नथिंग बट ये हमें बता रहे हैं कि सारा सिलेबस एरिया आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, अब इन सब के बारे में पहले हम एक एक करके समझेंगे कि सारा सिलेबस एरिया हमें बता क्या रहा है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. लेट अस टॉक अबाउट सिलेबस एरिया ए. सिलेबस एरिया ए फोकसेस ऑन कि आपकी बिजनेस के कितने टाइप्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, एंड आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा बनता है. यू कैन सी द टॉपिक. We are talking about the purpose and the types of business organization, that why we are making any organization. What is the reason for their existence? And what all stakeholders are involved over there? So, stakeholders are not only shareholders. It also involves customers, suppliers, government, anyone who has some interest in the company. So, your company will interact with all the stakeholders. How it does that? We will focus on that. And also, we will be having a lot of external environment going on, which directly or indirectly affects the business. You must have learned about pestle analysis. This is what it is. Political aspect, economical aspect, the macroeconomics and macroeconomics, right? Then we have social factor, we have legal factor, we have technological factor, we have environment factor. So all of these are nothing but how the external environment of the company is affecting the company. So that's where this entire business area is focusing upon. Then we have syllabus area B, in which we will discuss more about, how the culture is an important factor to make sure that the company is growing. अब आप खुद ही को ले लो, or any individual person, because even business is a entity, right? Business is an entity. Take it as a individual person. So how the person behave, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो किस कल्चर में बिलोंग करता है, किस कल्चर में वो आगे बढ़ता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू ग्रो इन लाइफ, राइट? विच इज सेम फॉर द बिजनेस. सो बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, उसका अंदर का कल्चर क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, so that we can ensure that there is sustainable growth happening in the business, right? So syllabus area B is focusing on that part. Now syllabus area C. Syllabus area C is a bit technical. Over here you will be introduced to accounting function and finance function,
and how they interact with the remaining functions of the business. For example, production function, sales function, marketing function, etc. Yeah. Then in the last 3 decades, we have seen a lot of scam happening. बहुत फाइनेंशियल क्राइम हुए एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरे ग्लोब में बहुत सारे रेगुलेशन सेटअप किए गए. फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव सेबी, राइट, हु मॉनिटर्स दैट वेदर एनी फाइनेंशियल क्राइम इज हैपनिंग और नॉट. And also as a company, you have to ensure that your internal controls are very strong, that your business is not getting involved in those scams and are not doing that scam, and how technology can help you in that matter. So this section is more on that. Of course, it is a very junior level, so you will be not getting a lot of exposure to this, but you will be getting some awareness, which is very important, which is the fundamental need. Now, syllabus area D. Syllabus area D is more focused on people skill. Because understand, when you're doing a business, you can't do that alone. You need a team of people. Right? For any business, human resource is the most important asset. But problem ये है कि human सबसे complex creature है. कहते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती. Which stand true for the humans also. Because every individual, उनका IQ different है, उनका EQ different है. So it is very important that you pick up right people for your team. उनके पास proper talent हो, right? So team formation, very important. But only forming team is not enough. Then you have to motivate them. You have to develop them. You have to train them. You have to ensure that वो आपसे सीख रहे हैं और आप उनसे सीखें. जब ये सब हो पाएगा तभी you are a good leader, you are a good manager, you are a good supervisor. And then in the end, of course, you have to review their performance. You have to, provide them proper appraisal so that they can be motivated further. So this entire syllabus area is focusing on that aspect. Then we have section E. In the previous section, we talked about, performance of the entire team. But now syllabus area E will talk about your own performance. Okay? That how you as an individual can contribute to the team and to the company. So how personally you can be more effective than before. How you can provide a proper communication to the entire organization. If you are not effective, then what will be the consequences? Right? और अगर कुछ conflict हो जाता है because आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग involved हैं, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है, थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं. तो आप इसको कैसे ठीक करोगे, वो भी हम इस सेक्शन में सीखेंगे. एंड देन वी हैव द लास्ट सेक्शन व्हिच इज मोर ऑन एथिक्स, व्हिच मींस वी नीड टू नो और वी नीड टू आइडेंटिफाई फॉर एवरी सिंगल सिचुएशन सही क्या है, गलत क्या है. ठीक है, कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वी हैव सही एंड सही, राइट एंड राइट, और वी हैव रॉन्ग एंड रॉन्ग. उस टाइम पे हमें ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा सही कौन है, ज्यादा गलत क्या है, एंड देन वी हैव टू मेक अ डिसीजन. सो एथिकल डिलेमा. ठीक है, सो दिस इंटायर सिलेबस एरिया इज फॉर दैट एस्पेक्ट. अब हम एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं. सो इन ACCA all the exams are computer based. When we talk about BT, the exams will be for 2 hours, which will be having 2 sections of 100 marks. So section A, in that you'll be having 30 questions of 2 mark each and 16 questions of 1 mark each. So total of your section A will be 76 mark. Then you'll be having section B, in which you'll be having 6 questions of 4 marks each. Right? Totaling up to 24 marks. Now section A or section B, the entire paper will be objective type, which means MCQs, filling the blanks, true, false, all those kind of a thing. Now the next subject, which is Management Accounting MA. Even in MA, we have in total 6 syllabus areas, A, B, C, D, E and F. Syllabus area A, which is the nature, source and purpose of management information. Then syllabus area B, which is data analysis and statistical technique. Then we have syllabus area C, which is cost accounting techniques. Then we have syllabus area D, which is more into budgeting.
then E into standard costing, and then finally F into performance management or measurement. Yeah. Now we will talk about them individually one by one in more details. First, about syllabus area A. So syllabus area A is you can say kind of theory in which you will talk about how you can collect the data. Very first thing, how you can collect the data, and then how you can use the data to provide insightful information to the management, and how you can present that information. Okay, so this area is on that aspect. Then we have syllabus area B. In previous section, what you learned was how to collect data and how to present it. But before that, or somewhere in between, you need to know that how you can use that data for analysis. And that's what syllabus area B will teach you, that how you can analyze that data to provide some information or some insight to the management. So you will learn about mean, median, mode, standard deviation, all those statistical technique. Okay? You will learn how to do forecasting using high-low method or linear regression or time series analysis. Okay? Now when you're doing all those things, in order to increase your speed, doing that stuff on calculator can slow you down. So in real life, what we do is we use spreadsheets like Microsoft Excel to do that. Okay? So you will be introduced to spreadsheets also in this syllabus area B, so that you can perform all these analysis, all these statistical techniques a bit faster. Then we have syllabus area C, which is a very technical syllabus area or section, because over here you have to get a good understanding about different costing technique like absorption costing, like marginal costing, like activity based costing, like life cycle costing. Now all these things will help you to record the cost and then tell the company about the right profit. So you will know how to record the cost for material, for labor, for different overheads. Okay, so this is your syllabus area C. Then your syllabus area D talks about how you can make a proper planning for your business. Because understand, if you don't have a plan, then you are running blind. बहुत जरूरी है ये प्लान बनाना. ठीक है. सो बजटिंग कुछ और नहीं, आपके लिए वो प्लानिंग ही करके देता है. इट एस्टैब्लिश अ रोड मैप फॉर यू, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू. अब ये बजट बनेगा कैसे, कौन कौन से बजट बनेंगे और इसका इंपैक्ट आपके कंपनी पे क्या रहेगा, आपके स्टाफ पे क्या रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ योर बजट इज वेरी इजी, देन योर स्टाफ में हैव लेड बैक एटीट्यूड. और अगर वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट टू अचीव वाला बजट है, तो क्या हो जाएगा, आपके लोग पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे. सो यू हैव टू इंश्योर दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द बजट इज समवेयर अचीवेबल but challenging. ठीक है. So this syllabus area is more into that aspect. Then syllabus area E. अच्छा, हमने प्लानिंग कर लिया, हमने पिछले सेक्शन में प्लानिंग कर ली, बट आपका एक्चुअल आपके प्लानिंग से बहुत डिफरेंट हो सकता है. जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है ना. दैट इज ट्रू फॉर द बिजनेस ऑल्सो, कि यू मेड अ बजट बट योर एक्चुअल इज कंप्लीटली डिफरेंट और देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन दैट, जिसको हम कॉस्टिंग में वैरिएंस बोलते हैं. सो इन सिलेबस एरिया ई वी विल डिस्कस दैट ओके, वी हैड अ प्लान, वी हैड अ बजट, नाउ वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुअल्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड द प्लान. सो व्हाट आर दोस डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस क्यों अकर हुए हैं, उस डिफरेंस से हमें जो इंपैक्ट पड़ा है वो फेवरेबल है, अच्छा है, या थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. Then we have syllabus area F, where we will talk about how to measure the performance of the company and of the individual. Financial aspect पे भी, like profitability के ऊपर भी, and non-financial भी. For example, as a business, is your customer satisfied with your performance? Because in today's time, customer is the king. So whatever product or service have you provided, did that met the expectation of your customer? Even that is a performance that you have to ensure. ठीक है. So syllabus area F is on that aspect.
Now when we talk about the MA एग्जाम विच इज सेम, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क का पेपर रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड रहेगा. इसमें भी 2 सेक्शन. सेक्शन ए वी विल बी हैविंग 35 questions of 2 mark each, which is 70 marks in total. Section B, we will be having 3 questions of 10 marks each, in total 30 marks. So both the section totaling up to 100 marks. And again, all the questions will be objective type. MCQ, filling the blanks, true false type of question. Now the last subject of your knowledge level, which is financial accounting, FA. Now in this particular paper, we have in total 9 syllabus area. A, B, C, D, E, F, G, H, and I. So syllabus area 8 talks about context and purpose of financial reporting. Syllabus area B talks about accounting principles, concepts, and qualitative characteristics. Then we have section C, which talks about use of double entry and accounting system. Then we have syllabus area D, which talks about recording transactions and events. Then we have syllabus area E, reconciliation. Then F, preparing trial balance. Then G, preparing financial statement. Then H, preparing basic financial statement. And then finally, syllabus area I, which is interpretation of financial statement. Now over here we have one correction. The syllabus area H is not preparing basic financial statement, but it is preparing consolidated financial statement. I will talk about that in the upcoming slides. Let's talk about syllabus area A first. So syllabus area A is simply talking about that what is the need of financial accounting. ठीक है? Why do we do it? ठीक है? And when we are doing it, what is our responsibility? What is our duties while doing so? Okay? And of course that our financial accounting should be accurate, it should be fair, and all those things. Which means a very theoretical section it is. फिर आता है आपका सेक्शन बी, जहां पर आप बात करोगे कुछ अकाउंटिंग की बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कंसेप्ट, डबल एंट्री कंसेप्ट, मेटेरियलिटी कंसेप्ट, एंड ऑल दोज थिंग्स. Yeah. So again, a theoretical section. Now section C, over here you will learn what is double entry, what is bookkeeping, what is journal entry, and what is ledger account, and how do you do it. So it is more about how you record the transactions of the business and then how you group it into different accounts. Then we have syllabus area D, which is going a bit forward from your ledger account and talking individually about how you do accounting for sales and purchase. आप कैश कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप इन्वेंट्रीज को कैसे वैल्यू करोगे, ठीक है, व्हाट आर योर टैंजिबल नॉन करंट एसेट एंड हाउ डू यू डू अकाउंटिंग फॉर दैट. सिमिलरली इंटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, ठीक है. नाउ अक्रूवल कंसेप्ट के वजह से देयर आर कपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट अराइजेस इन द अकाउंटिंग. जैसे कि आपने एडवांस में कुछ पे कर दिया या एडवांस में आपने कुछ कस्टमर से पैसे ले लिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, ठीक है. फिर कुछ प्रोविजंस, कुछ कंटिजेंसीज रहेंगी आपके अकाउंटिंग, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो व्हेन यू डू योर बिजनेस यू नीड फंडिंग व्हिच इज कॉल्ड कैपिटल. इधर द ओनर विल ब्रिंग द मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट व्हिच इज कॉल्ड इक्विटी, या वो बाहर से उधार लेगा व्हिच इज कॉल्ड डेट. So again we will discuss about that also in capital structure and finance cost. ठीक है. So this is your syllabus area D. Then syllabus area E, which talks about reconciliation. मतलब क्या हुआ, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कई दफा क्या होता है कि आपके फिगर्स मैच नहीं होते. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक में पासबुक मेंटेन होता है, और आपका एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी है लेजर में. ठीक है. आपका जो खुद का बुक है कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें कुछ डिफरेंट फिगर है, और आपके पासबुक में जो बैंक से आया उसमें कुछ और फिगर है, मिसमैच है, यानी कि कहीं पे तो कुछ मिस्टेक्स हुई, तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. ठीक है. सो ऐसे कपल ऑफ और मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ पेबल्स, वो भी आप ठीक करेंगे. सो ये सेक्शन आपका उस बारे में कि कहीं पे आपके कुछ फिगर्स मिसमैच हो रहे हैं, आप उसको रिकंसाइल करो, आपने गलती सुधारो और उसको ठीक करो.
Then syllabus area F talks about, again, when you're doing accounting, good chance you may end up doing some error. ठीक है? So this section talks about that how you can find those error and how you can correct those error. Then syllabus area G. Over here you will learn how to make basic financial statement like income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement, all those things. ठीक है? So what are those financial statements and how do you make them? Then we have syllabus area H, where we will be discussing about preparing consolidated financial statement. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंडर और भी कंपनीज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो टाटा इज अ बिग ग्रुप. In that group, there's a lot of companies like TCS, Tata Motors, है ना, टाटा स्टील्स. तो ये सारी कंपनी डिफरेंट है. टाटा स्टील डिफरेंट है, टीसीएस डिफरेंट है, टाटा मोटर डिफरेंट है. ये इंडिविजुअल कंपनी है, बट इनका एक पेरेंट कंपनी भी है जिसके अंडर ये आते. करेक्ट? सो टाटा स्टील अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेला बनाएगा, विच इज ट्रू. टीसीएस अकेला बनाएगा, विच इज ट्रू. ठीक है, टाटा स्टील अकेला बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू. बट इसके बाद इनका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा, यानी कि सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में क्लब हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वो भी हम सीखने वाले हैं. एंड देन द लास्ट सिलेबस एरिया आई, where we will talk about how to do analysis or interpretation of financial statement, जहां पर हम मेजरली रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज लाइक एसेट टर्नओवर रेशियो, पेएबल डेज, रिसीवेबल डेज, एंड सॉल्वेंसी रेशियो लाइक गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम यहां पर खाली कैलकुलेशन नहीं सीखना चाहते हैं, वो तो हमने सीखा हुआ है 11-12 में. यहां पे हमें कैलकुलेशन के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन भी सीखना है. इफ यू रिमेंबर, बचपन में हमारे पास एक ड्राइंग बुक आती थी जिसमें बहुत सारे डॉट्स होते थे. हम डॉट्स को ज्वाइन करते थे और एक ड्राइंग बन जाती थी, एक पिक्चर बन जाता था. ये भी कुछ वैसा ही है. व्हेन यू कैलकुलेट द रेशियोज, एवरी सिंगल इंडिविजुअल रेशियो इज एन इंडिविजुअल डॉट. Then you have to connect all the ratios, you have to connect all the dots, and you will get a big picture about the company, the big story about the company. कि कंपनी ने परफॉर्मेंस क्या था, कैसा था, अच्छा था कि खराब था, और क्या क्या एरियाज है जहां पे कंपनी स्ट्रगल कर रही है. यू विल गेट दैट क्लैरिटी विद दैट रेशियो इफ यू आर इंटरप्रेटिंग इट इन द राइट मैनर. ठीक है, तो हमें वो भी यहां पे फोकस करना है. देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम. अगेन 2 hour एग्जाम. In total 100 marks, again 2 section. Section A 35 question of 2 mark each, and section B 2 question of 15 mark each, and all the questions will be objective type. So this is it. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि नॉलेज लेवल में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनका सिलेबस क्या है, उनके एग्जाम्स क्या है. आई होप नाउ यू हैव गॉट अ बेटर क्लैरिटी. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.